So yeah, welcome everyone. We are just going to go through the Finland program and what we have planned for the October. So as you can see, the package highlight, you can also have you will also have access to the itinerary. You can go through that. In terms of the package highlights, we will be visiting three schools from different types of schools, starting from kindergarten to primary and a high school visit. So three different school visits are arranged. There is a visit arranged at the national agency. So national agency is Finland's government agency that creates all their curriculum. So we will be talking to their members and they will be telling us about what goes into the Finnish education curriculum. Then we will have guided tour in Helsinki. From Helsinki, so we'll stay in Helsinki for 3 days, and then the next 3 days will be at a town called Turku. It's the oldest Finnish town, and we will be taking a tour to the University of Turku and visiting a high school there. Apart from that, there are some leisure activities planned both in Helsinki and Turku. So the package is created for 6 nights and 7 days in a three-star hotel. However, if you are able to abide by the timeline that we've provided, we will be able to offer you a four-star hotel recommendation within the same price package. So day one, again, this itinerary is available in the itinerary, and I would recommend you to go back to the group and check the itinerary. Some of the days there are some meals are provided as well when we would go to the school visits, and these meals are also mentioned in the itinerary. So yeah, so most important point, like some people would want to have flexible um, itineraries. But for those who are coming between between the mentioned date, between 22nd or 28th, this is the pricing that applies, and you have two modes of transfer of the funds available. Option one, if you would like to claim the GST back, this is we will be providing you with an Indian account. In the second option, if you want to save the GST, if you don't want to pay the taxes, there is another option we are providing, but that would you have to transfer the money to the UK account, which will also have some additional rates in terms of foreign transaction and money conversion rates applicable. These rates are applicable only until 10th or 11th of August, and we will revise the plan based on the flight cost that we get, because the flight pricing for Finland is very dynamic and it will change every week. So we will revise the plans accordingly. In case you don't want the flight options to be included, we are providing that as well, but you will have to plan your flight tickets wherever you want to fly into Finland from, and we will expect you directly checking in at the hotel yourself. So in that case, this is the pricing that applies for in terms of transfer to the Indian account, and if you're transferring to the UK account, that's the price. So essentially, what we would do is we were reducing 70,000 as the flight charges. For food and accommodation, breakfast plus meals, as mentioned in the itinerary, would be provided. If you transfer the funds before 11th August, again, instead of three-star, we will try to get the bookings done in a four-star hotel, a very nice hotel both in Helsinki and in Turku. But if you transfer it after 11th August, we might not be able to. We will try, but we might not be able to offer you the same on the same price point. Weather expectations in October, it's going to be cold. The daytime temperatures would be around 5 to 10 degrees, and night temperature would fall below freezing point. So be prepared with warm clothing. And in terms of the dates, after you transfer the money, we will try to get you the visa letter by 15th of August, which you can use for your visa application, which will take around 2 to 4 weeks of time for Schengen visa in Finland. Price and package revision. So yeah, so we will revise the pricing on 13th of August. So from next week on, from 14th onward, we will be providing a new prices. Again, this is because the pricing of the flights is dynamic. This is not in our control, and we can't offer you the same price if the flight price changes. Account details will be shared to you once you select your option. And we will have another full orientation with the Finnish people who are all helping us organize this. So that would be on 9th and 10th October once everyone has the visa and everything else sorted. In terms of the program date, 90%
it would be carried between 22nd and 28th of October. There is a slight chance that it might drift to 23rd to 29th October, but 90% is of 90% probability is that we are going to have it between 22nd and the arrival to New Delhi on the 28th October. So 28th October finish time, that means we will, so I just had a look at the flight, and the flight arriving in New Delhi will be on 29th October, early morning, 5 o'clock. What if the visa gets rejected? We will issue you full refund, minus 5,000 of administration charges of, the accounting charges that we would incur. Previous programs, you can see some people who are already here in this. So I just wanted कि अगर आप ये चीज आइटनरी में मेंशन कर देना कि only 5,000 will be, that would be great, because कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज को थोड़ा वो करेंगे, वरी करेंगे। नहीं, ये मेंशन है ऑलरेडी, 5,000 मैंने रुपए लगेंगे। हाँ, सर ये मेरे पास की आइटनरी नहीं है, जहाँ तो मुझे एक बार आइटनरी शेयर कर दें यार, शेयर प्लीज। हाँ, आप ग्रुप में हैं सर? हाँ मैं ग्रुप पे हूँ। ग्रुप में है तो हो सकता है बाद में ऐड हुए हों, इसलिए हाँ, नहीं दिख बाद में ऐड होंगे, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। 4 ऊपर में से 1 ऊपर मैंने उधर लगा रखा, 3 तो उधर लग गए थे। अच्छा ठीक है। So in case the visa gets rejected, we will issue you 5,000 full refund, minus the 5,000. So these are the previous program in July. We just finished, and I think Sushil ji, Vikas ji, and some more people who are on this call were a part of this program. So dates, finally, we need the transfer of amount by 11th of August to ensure you the upgrade to 4-star, as well as to ensure you the pricing remains the same. If you transfer after 11th of August, we might revise the prices or give you some other options. We are expecting the visa letters to be out by 15th August. Visa processing will take 2 to 4 weeks. If visa is rejected, you get full refund minus 5,000 rupees. If successful, we will be inviting you to the final orientation, which will be held on 9th or 10th of October. So that's from my end. We will take any questions if there are. जो चेकआउट है वो भी हेल्किन से ही है कि हमारा कहीं और से? चेकआउट हमारा तुर्कू से, फर्स्ट 3 नाइट्स हेलसिंकी में होंगे, सेकंड 3 नाइट्स तुर्कू में होंगे। तुर्कू से डायरेक्ट बस हमें ले जाएगी हेलसिंकी एयरपोर्ट। हेलसिंकी एयरपोर्ट से हमारा चेकआउट है ना? हाँ, एयरपोर्ट हेलसिंकी, हाँ, चेकआउट होटल तुर्कू में होगा, बट हेलसिंकी एयरपोर्ट ले जाएगी बस हमें वहाँ। तो हेलसिंकी एयरपोर्ट सुरेश जी कितना टाइम लगता है पहुंचने में? आई थिंक 2-3 आवर्स लगेंगे, 2-3 आवर्स। तो 2-3 घंटे की जर्नी रहेगी, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। नहीं, तो इसका मतलब ये है सुयश के अगर कोई टिकट अपने आप कराता है तो वो टिकट और वहाँ हेलसिंकी में होटल में पहुंचने तक का उसको अपने आप कराना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा। करेक्ट सर, मैं बात करूँ वन वे वापसी की नहीं कराना चाहता हूँ आपके साथ। सर वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो ट्रैवल हमारा एजेंट है वो एक ही सेक्टर में बुक करता है। या तो आप दोनों टिकट करें या फिर आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि वो जो फ्लाइट का फेयर है वो फिन एयर के साथ उन्होंने वो होगा उनका अपना, तो वो दोनों सेक्टर का एक साथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम मतलब आप हमें फिर उसका फिन एयर का आप हमें PNR दे देंगे, ताकि हम अगर अपग्रेड करना तो हम फिन एयर पे अपग्रेड कर सकते हैं उसमें। हाँ, अगर आपको अपग्रेड करना है, मतलब किसका PNR देंगे? मतलब अपनी जो फ्लाइट का PNR नंबर बता, फ्लाइट का, उसको अगर अपग्रेड करना होगा तो वी हैव एन ऑप्शन। Yes, so if you want to, correct, we will share you with the PNR, and if you want to upgrade to business class or any other class, we will be able to do that. अगर आप हमें वो प्रोवाइड करते हो कि if you want an upgrade, we will issue you upgrade as well, but whatever the additional charge, we will let you know. अच्छा, एक बात बताओ सुयश कि ये जो थ्रू जर्मनी का है ये क्या है? मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाई पीपल आर। तो ये आई थिंक जयप्रकाश जी ने मेरे को कल बताया था कि जर्मनी के थ्रू, अगर बर्लिन के थ्रू आप फ्लाइट लेके आते हैं तो थोड़ा सस्ती पड़ेगी। बर्लिन की फ्लाइट्स इंडिया से सस्ती होती हैं। तो उसमें टाइम का क्या इशू नहीं रहेगा? वो लोग सर घूमना चाह रहे हैं, वो घूमना चाहेंगे, वो शायद एक हफ्ते पहले आ जाएंगे, वो एक हफ्ते पहले जर्मनी घूमेंगे, फिर वहां से सीधे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है। और बर्लिन से 6 घंटे की फ्लाइट है, 7-5 घंटे की। हमारा जो होटल में स्टे है वो कितनी दूर होगा एयरपोर्ट से? तो वहाँ पे होगा हमारा
मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। आप हेलसिंकी की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ हेल्सिंकी। देर आर टू थिंग, वन थिंग आपने विशाल जी पूछा ना कि टाइम कितना है, तो हाफ एन आवर बाय कैब लगेगा और 1 आवर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इट्स 30 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम मतलब उबर वर्क ओवर देना। उबर या टैक्सी, वहाँ पे टैक्सी तो वर्क करेंगे, उनकी अपनी टैक्सीज होंगी। उबर आई एम नॉट श्योर, बट या पर हम वहाँ डेफिनेटली। पे आपका प्रोग्राम कौन सी डेट से स्टार्ट होगा बेसिकली, मतलब कितने बजे आप 23rd से स्टार्ट होगा, 22nd की नाइट को चेक इन आउट, 22nd इट संडे, तो मंडे से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। मतलब अगर 22 को लेट नाइट भी चेक इन करता है तो उसमें करेक्ट, आपको कोई इशू नहीं रहेगा? नहीं कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू रीच द होटल आफ्टर 3 PM दैट शुड बी फाइन। ओके। एंड सुशील जी, आपके पॉइंट पे, ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें कोई वैसे सेशंस नहीं है, दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपोजर विजिट, जिसमें में स्कूल्स के एक्सपोजर विजिट। सो इफ यू गो थ्रू द आइटनरी यू विल नो, इसमें कोई 1-to-1 जैसे लेक्चर्स नहीं है, जैसे हमारे कैम्ब्रिज में थे तो लेक्चर्स नहीं है इसमें, केवल इंटरेक्शन है। तो आपके वहाँ पे नेशनल एजेंसी में इंटरेक्शन है, फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड शो यू द स्कूल्स, जैसे हमारे यहाँ का स्कूल विजिट था, उस टाइप के 3 स्कूल्स में विजिट है। करेक्ट। सो करेंगे। तो 9 और 10 अक्टूबर को फुल ओरिएंटेशन जो होगा, जब सब लोगों का वीजा लग जाएगा, तो वी विल हैव मीटिंग विद देम एज वेल। बट having said that, these people are very experienced. They have organized more than, like, hundreds of groups from different countries, and they are very much experienced with the Indian groups as well. So they have in the past they've had Indian groups attending and seeing their model. So ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहे हैं, so they are well experienced group.